I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द संडे लीग पंडित चैनल। अभी मीडिया में बहुत डिबेट चली कि क्या रोनाल्डो और मेसी का एरा सही में खत्म हो गया है, क्या हालैंड और एम्बापे आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स। तो हमने सोचा हम भी अपना टेक देते हैं इस पे और देखें हमारी जनता क्या सोचती है इसके बारे में कि क्या रोनाल्डो मेसी एक्चुअली खत्म हो गए हैं कि अभी भी उनके पास कुछ साल और हैं एट द टॉप लेवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, like Utkarsh said, अभी सोशल मीडिया पे काफी डिबेट चल रही है लोगों के बीच में। there's a जो सोशल मीडिया फिनोमेना जो फुटबॉल को इतना ज्यादा टेक ओवर कर दिया, इट्स आई थिंक बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द मेसी रोनाल्डो डिबेट, कि लोग कह रहे हैं कि अभी रोनाल्डो का प्रीमेच्योर इतना एग्जिट हो गया चैंपियंस लीग से 3 साल लगातार यूवेंटस के साथ। They have not progressed beyond the quarterfinals, and especially with Messi as well, they haven't won the Champions League for now what's been around 6 years. So obviously Barca के around भी एक debate चल रही है, and Messi is obviously centered around Barcelona. So लोगों में एक बहुत ज़्यादा डाउट आ गया है, especially with the emergence of Haaland and Mbappe, कि क्या Messi and Ronaldo are they any longer considered the top players in world football? And this is what is basically we are going to be discussing. And I'll start with Utkarsh's view on it and like what he thinks with regards to the social media almost एक तरीके से आप कह सकते हो disrespect ही हो रही है मेसी और रोनाल्डो की, कि how they are not a lot of people are disregarding their achievements and their caliber of players they are. डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक जो ज़रूरी बात है कि दे आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन सक्सेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है कि पिछले कुछ 10 साल 12 साल से आप देख सकते हैं ओवरसीज स्कोरिंग मोर देन 20 लीग गोल्स। और 20 लीग गोल्स तो एक यूजुअल स्टैंडर्ड है कि मतलब अगर वो 30 लीग गोल नहीं मारते तो एक कह सकते हो कि अनसक्सेसफुल सीजन माना जाता है। तो दे आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन सक्सेस मेरे हिसाब से। और ऑब्वियसली हालैंड एम्बापे आर द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन ये कहना कि दे आर टेकिंग ओवर मेसी एंड रोनाल्डो इज नॉट फेयर इन माय ओपिनियन, कंसीडरिंग आई एम अ बार्सिलोना फैन एंड यू आर यूनाइटेड फैन। ऑब्वियसली थोड़ा बायस भी है, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल मेरे हिसाब से ये कहना काफ़ी गलत होगा। और ये जो एक मेजर फिनोमेना है कहने का, इसका एक ये भी रीज़न है कि जो प्रोजेक्ट रोनाल्डो है यूवेंटस में वो इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, कंसीडरिंग ही वाज ब्रॉट इन टू विन द चैंपियंस लीग, वो नहीं हुआ। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ टॉपिक है, थोड़ा सा ये भी बोलना चाहता था प्रोजेक्ट रोनाल्डो पे कि यूवेंटस को मेरे हिसाब से रोनाल्डो नहीं साइन करना चाहिए था, क्योंकि फाइनेंशियली उन पे काफ़ी बड़ा हिट हुआ है वो। जैसे आप देख सकते हो जब आया था एक सीजन बाद उन्हें कैंसेलो को बेचना पड़ा था और डेनिलो को स्वैप था। तो ऑब्वियसली जुवेंटस सबको लग रहा था क्या करे जुवेंटस। तो जुवेंटस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कैंसेलो को बेच के डेनिलो खरीद लें, लेकिन इतनी ज़्यादा वेजेस थी उस समय हिगुएन की, रोनाल्डो की, डिबाला की भी अराउंड 8 मिलियन है ईयर है, वो 10 मिलियन मांग रहा है नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इतनी ज़्यादा वेजेस थी कि उनको मजबूरन बेचना पड़ा। तो एक जो फाइनेंशियल प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था जुवेंटस पे, और अब कोविड की वजह से और हो गया। तो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ व्यूअर्स को। अचिन भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे कि क्या ऑब्वियसली दे आर परफॉर्मिंग, थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप स्टार्ट देखो तो, लेकिन आर दे रियली टेकिंग ओवर इन द कपल ऑफ ईयर्स कि रोनाल्डो मेसी विल कंटिन्यू एट द टॉप ऑफ द गेम? I think Project Ronaldo वाला point was quite valid, specifically because आप जब से रोनाल्डो गया है यूवेंटस, everybody has been, even in the mainstream media में आप देखो जो पंडित्स हैं and everybody who is in the football commentary industry या जो भी YouTube पे भी बहुत लोग इस signing को they just labeled it as Ronaldo being bought in for the Champions League only, and anything short of that will not be regarded as a success. And आप कह भी सकते हो the lofty standards रोनाल्डो ने जो खुद के लिए रखे हैं, and जो रियल मैड्रिड की 3 लगातार चैंपियंस लीग थी उसमें रोनाल्डो कितना बड़ा हाथ था, everybody knows that. So people were expecting कि अब 3 years down the line they would have won at least one Champions League, and बेचारा बुफॉन भी उस चक्कर में रिटायर नहीं हुआ क्योंकि चैंपियंस लीग है। तो I think that is something which has obviously heated up the debate काफी ज्यादा. It's made it more everybody's being involved in it a lot more. तो मुझे लगता है गलत है, बिकॉज अब मेसी रोनाल्डो के आप स्टैंडर्ड्स उनके हाई हैं, फिर भी उन हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो दोनों इंडिविजुअली इफ यू सी दे आर गिविंग देयर ऑल फॉर द टीम. आई थिंक रोनाल्डो हैज बीन स्कोरिंग कंसिस्टेंटली वेल. पहले सीजन में भी उसने 23-24 गोल्स मारे थे, लास्ट सीजन ही स्कोर 31 गोल्स.
in the league, and this season he is already the top scorer with 23 goals. So if you see their contributions to them, even with Messi, though this season started off a little slow, obviously क्योंकि उसकी इतनी जो ongoing transfer saga चल रही थी पार्टिकुलर के साथ, जो उसके बाद you did see that sort of take him time to brush that off and get going again, and now he's the top scorer in La Liga. तो आप देख सकते हो कि they are still performing well, but I think the major reason why people are unnecessarily giving leverage to this debate is because कि जो इनके surrounding teams हैं, even Juventus, जैसे you made a point about Cancelo being sold, and with regards to Barcelona as well, कि Barcelona की भी जो surrounding team है, if you consider when Messi and Ronaldo were at the peak of their powers, or when they're still battling it out for Ballon d'Ors, and I don't think they're still not doing that. Obviously Lewandowski का जो goal scoring form है, उससे people are writing off Ronaldo and Messi a little more, which is surprising to me. And coming to that fact only, that अब बारसा की टीम देखो, they are a team in transition. We touched that before. हमने जो transfers का वीडियो बनाया था, and even in other videos we have discussed that Barca under Koeman is a team which requires few seasons before it can be considered the big shots in the Champions League and in Europe in general. And even with Juventus, Juventus में भी हमने I think FKR के चैनल पर जब हम लोग गए थे, हमने ये डिस्कस किया था कि there have been 3 managers in Juventus in 3 years, and obviously अगर आप एक टीम की सक्सेस देखो, गेज करो, I think it's very very unfair to criticize Ronaldo, because if you see that Sarri के अंदर they were playing fairly well, and Ronaldo had it so far उसने 31 goals मारे थे Sarri के अंदर. So now they're just because they exited the Champions League, their patience ran out with Sarri. And I think Sarri एक काफी unlucky manager है. अगर आप देखो Chelsea में भी एक सीजन से ज्यादा लास्ट नहीं किया, after doing so well at Napoli, and he was very unlucky. जैसे लिवरपूल का जो सीजन था वो सिटी वाला, जिसमें सिटी won by 1 point, I think that was very similar for the Napoli season. In any other season, if they won that much, they would have gotten that many points. So just not like talking about Sarri that much, but अगर आप देखो now they're willing to give, अभी आपने Nedved की comments देखी होगी Twitter पे, that they are sticking with Ronaldo and Pirlo for another season. Ronaldo obviously 1 साल बचा है, and Pirlo they will not sack him. So अगर आप caliber of manager देखो तो Sarri obviously deserve that shot as well. And क्या पता आपको कि team chemistry और बढ़ जाती है, and maybe they wouldn't have lost to Porto in the round of 16 this time. So I do think it's a lot. जो उनके surrounding team है, जो the circumstances they are in right now are a lot more to blame than their individual performances being off the point. What do you think? Yeah, definitely. Coming on to Messi, क्योंकि रोनाल्डो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया है. मेसी की बात करें तो अगर तुम नेमार के जाने के बाद से obviously लुइस सुआरेज़ एंड मेसी वर not लुइस सुआरेज़ को थोड़ा इन ऑफ रहता था, सॉरी आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म रहता था बहुत ज़्यादा. मतलब जो लुइस सुआरेज़ स्टैंडर्ड से उस हिसाब से देखोगे तो थोड़ा उतना कंसिस्टेंट नहीं था. मेसी हैड बीन कैरिंग बार्सिलोना अलोन in my opinion. और इस सीजन भी देखो तो Messi has 23 goals, 8 assists. Obviously Griezmann has chipped in with some goals. Dembele has been good lately. लेकिन if you take Messi out of the team, मुझे नहीं पता कि बार्सिलोना टीम कहाँ जाएगी and who would really replace him. तो उस हिसाब से देखो तो एम्बापे he has been winning all the titles in France, लेकिन that is obvious if you play for PSG कि अगर आप टाइटल नहीं जीतते हो तो that will be a big failure, क्योंकि जिस हिसाब से PSG की टीम है, जिस हिसाब से उनके पास बजट है. तो yes, Mbappe has been winning lately a lot of titles. और अगर हालैंड का देखो तो he has not really won anything with Dortmund as of now. Obviously 1.5 साल हुआ है तो फेयर नहीं हालैंड पे क्रिटिसिज्म. और उसके पहले वो साल्ज़बर्ग में, तो साल्ज़बर्ग में भी obviously PSG जैसी हालत है, they are the team that dominates the league. तो obviously there he won the league with Salzburg. तो I think अभी take over. Yeah, they will take over Messi and Ronaldo in few years, क्योंकि obviously Messi is 33. He has lost a lot of pace, दिखता है आप लोगों को. Ronaldo is 36. I think Ronaldo can go up till 39 or 40, the next Zlatan Ibrahimovic. तो मेरे हिसाब से अभी तो 2-3 साल इनके पास और हैं, और उसके बाद शायद एम्बापे और हालैंड टेक ओवर कर पाएं इन दोनों को एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि at this point of time they have not won anything major with their clubs, barring PSG, क्योंकि obviously they dominate the league. और हालैंड ने भी कुछ खासा जीता नहीं है. तो मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मतलब कंक्लूजन मैं अगर दूं तो इस डिबेट का कि काफ़ी ऑब्वियसली मीडिया हाइप की वजह से ये हो रहा है, और जो जुवेंटस और बार्सिलोना है दे हैव बीन नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल लेटली इन द चैंपियंस लीग स्पेशली. तो ये एक मेजर रीज़न है. और
कुछ समय बाद मेरे हिसाब से they could take over Messi and Ronaldo, लेकिन not at this point. Definitely they are the best player in the world. I think specifically for Mbappe and Haaland, आजकल आप फुटबॉल फैंस को देखो, young फुटबॉल फैंस को देखो, not to criticize them, but something which I have found is that like a lot of impatience in football fans in general right nowadays, कि you know कि बहुत ही short sighted nature हो चुका है उन लोगों का कि आप देखो एक सीजन के बेसिस पे you know they'll start comparing, making very weird comparisons between players, and you know is he a better player than him right now, is X player better than Y right now. So I think that's wrong, and that's what is happening with Haaland and Mbappe. Obviously उन दोनों का चैंपियंस लीग में अगर आप स्टार्ट ऑफ देयर करियर देखो, इट्स वेरी ब्राइट, and you know there have been a lot of players who have started bright, but to carry that on for a period of for almost more than a decade now, because Ronaldo ने अपना पहला Ballon d'Or he won it in 2008, and now it's 2021, he's still going strong. So आप देख सकते हो 13 साल से Ronaldo, and even before his Ballon d'Or, I think 2005 and 6 season से ही you could really see United में जब वो था कि you could really see that there's a special player here, this player will come to the top of football very soon. और अगर आप देखो सेम विद मेसी एज वेल, यू नो बार्सिलोना में जैसे ही वो इमर्ज करना शुरू हुआ, इट वाज वेरी एविडेंट कि ये प्लेयर जल्दी बढ़ेगा आगे. You could say that for Mbappe and Haaland as well, that you know they are already showing signs of their being potentially great players down the line. But ये debate is more valid after I think after you know 5 to 6 years when Ronaldo and Messi, you know, sorry to cut you. 5 से 6 साल तो ज्यादा हो जाएगा. 2 से 3 साल would be more fair in my opinion. I just you know giving us the satisfaction that Ronaldo and Messi do carry on for playing 5 to 6 years. But अगर आप वैसे देखो तो Mbappe and Haaland, yes they are performing well, but you know if they are able to have a consistent period where they are able to dominate. अगर आप देखो in general Ronaldo and Messi के भी जो challenges वगैरह आए हैं, आप देखो रिबेरी जैसे प्लेयर्स हैं, रॉबिन जैसे प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर्स थे जो ये भी बहुत ग्रेट माने जाते थे, बायर्न की टीम में थे. देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव यू नो had a couple of seasons, 3 seasons, very stellar seasons, but then you see the drop off comes very quickly. और रोनाल्डो और मेसी में ऐसा ड्रॉप ऑफ अभी तक अब जाके भी नहीं आया. अगर आप देखो उनकी टीम्स हैव ड्रॉप्ड ऑफ, बट इंडिविजुअली दे आर स्टिल you know striving to they give their all for the team, and they're still very top players. And I think if they do decide to leave their respective clubs, चाहे Juventus हो चाहे Barcelona हो, I do think there still be a lot of players teams which are going to be after them. Obviously commercial value तो है उनकी, but in terms of their on the pitch value which they bring is also a lot. I don't think that you could really imagine even their national teams, Portugal and Argentina, without Messi and Ronaldo. You can't imagine them doing a lot very well as well, because they have been carrying the national teams as well. जो 2014 का वर्ल्ड कप था उसमें आपने देखा था फाइनल तक जो गई थी अर्जेंटीना. आई थिंक nobody thought that they will really go there, and Messi का उसमें वो टेलिंग कंट्रीब्यूशन था. Even with regards to Ronaldo pushing his team as well, it's been very evident that Ronaldo का काफी has had a major role. A lot of people question that यूरो में उसने फाइनल नहीं खेला और ये नहीं करा, इतना अच्छा खेला था या नहीं खेला था. But I do think that you know that type of mentality which he instilled into the squad, and काफी inexperienced squad था at higher levels of the game, if you see. So I think that was really important for his presence was extremely important there. So जब अगर Mbappe का देखो, Mbappe वर्ल्ड कप जीत चुका है already. That is obviously something which has made this debate even more, what you say, involving, more hyped up. And Haaland अभी कुछ नहीं जीता है, but even he looks like a goal scoring machine, or he is bound to leave Dortmund sooner rather than later. So I think we do have to give this sort of debate some time. I don't think it's an end of an era. जैसे हमने वीडियो टाइटल रखा, I don't think the era has ended just yet. अभी era बची है काफी रोनाल्डो और मेसी की. And I do hope that you know before they sign off from the beautiful game, they are able to give us you know some greater memories at the top of football. 2014 वर्ल्ड कप की जैसे हमने बात की तो ऑब्वियसली फाइनल को छोड़ के काफी अच्छी मेमोरीज है 2014 वर्ल्ड कप की. मैस्केरानो का भी बहुत अच्छा, मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम अलोंगसाइड मेसी. और मार्कस रो हैड अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप. मेरे हिसाब से उसी वर्ल्ड कप को देखते हुए यूनाइटेड ने रोहो को साइन किया था. तो रोमेरो हैड आल्सो गुड वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से. तो देयर वर मेनी क्या कहते हैं अंडर द रेडार प्लेयर्स जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, दे प्लेड वेल. और ऑब्वियसली अगर जैसे तुमने से रिबेरी और रॉबिन की बात की, तो जैसे कुछ लोग ये इसमें कहेंगे कि नॉट हालैंड, नॉट एम्बापे, देयर इज अनदर प्लेयर व्हिच इज बेटर देन मेसी एंड रोनाल्डो, दैट इज लेवेंडोस्की. दैट इज फेयर इन माय ओपिनियन, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो उसने गोल स्कोरिंग फॉर्म दिखाया है, ऑब्वियसली मतलब मेसी और रोनाल्डो से भी बेटर स्कोर कर रहा है. जैसे वो 5 या 6 सीजन पहले जैसे मेसी रोनाल्डो के नंबर्स होते थे, वैसे वो नंबर्स प्रोड्यूस कर रही है. 32 गोल्स इन द बुंडेसलीगा. ऑब्वियसली पिछले गेम वीक भी 10 मैन बायना की भाई ने फिर हैट्रिक मार दी. तो he has been tremendous lately in my opinion. लेकिन ये कहना कि
कि they are taking over Messi and Ronaldo as the best player. Lewandowski, he deserves the Ballon d'Or in my opinion. बहुत सही बात है, इसमें कोई argument नहीं है. He has been the best player. लेकिन Messi और Ronaldo को देखो तो they are the top 3, top 4 players in the world. मतलब obviously अगर आपको Lewandowski has been better in the last 2 years, काफी सही बात है, he has been better. लेकिन Messi और Ronaldo cumulative अगर आप 10-12 साल के देखोगे तो there is nobody better than them. और अगर कुछ brief period भी देख लो, अगर आप थोड़ा टाइम ले लो 2 से 3 साल, तो they are in the top 3, top 4 players in the world in my opinion. I think just before we sign off, I do agree with Utkarsh, and I think Utkarsh का point काफी अच्छा just bodes well into the point I made about their teams. Bayern की आप team देखो, the depth they have, the team they have, and not to sort of take away like any credit from Lewandowski, but if you have a team which is gelled so well and working so well, and they have good players surrounding them. Gnabry has been performing well for them. Muller he has regained his consistency for the past 2 seasons. Even the likes of Sane have come in, Kimmich, and they have a Goretzka. They have a team which is amongst the best in world football right now. And obviously, a striker of the quality of Lewandowski is reaping off the rewards. There is a stat out there as well that for the past, he's the only player who has been scoring 40 plus goals for the past 3 to 4 seasons. And Ronaldo and Messi obviously haven't produced numbers above 40, but they are obviously up and around it. So I think just before we sign off, I do think I agree with Utkarsh's points that they might not be the best players in the world, but they are one of the best players still in the world right now. And Mbappe and Haaland have a lot to do before they can have that accolade next to them. So I think with that we sign off. And I hope you guys like this video. It's not much of a long one. We just wanted to give our 2 cents on this topic because हमें लगा कि this is a debate which has been going on on Instagram, Twitter, हर जगह हम देखो. And even like when you're going to play football with your friends, some people initiate this debate and they're just asking यार Haaland क्या खेल रहा है, Mbappe क्या खेल रहा है, and everything. I think we are sort of being tempted into seeing players who are coming in, and it is obviously tempting to see new players come in, and we are very quick to write off players who have been doing so well. But obviously Utkarsh is a Barcelona fan, I'm a United fan, and we do have such fond memories of both the players we talked about, and we will never write them off. So obviously this was sort of like an emotional topic to discuss on, because obviously this is something which we don't want. And अगर आप इतने staunch fans से पूछोगे कि is this an end of an era, चाहे वो retire हो जाए, हम कहेंगे नहीं, end of era खत्म ही नहीं, कभी खत्म भी नहीं होगी हमारे हिसाब से. So I think all of you guys who are Messi and Ronaldo fans of either of the two, do leave your thoughts on this debate. आप क्या आपको लगता है Mbappe and Haaland को हम consider करना चाहिए as replacements to the crown of the best players in the world, or do you agree with us, and do you think that Messi and Ronaldo are still the best players in the world, and there's still time for anybody to take over that title? And अगर आप पे और कोई if you want anything us to discuss anything else, any other video idea that you might have, or anything trending which you might want us to debate on, feel free to leave that in the comment section below. And don't forget to subscribe to the channel, share this video, and like the video. And thank you everybody for watching. Yeah, before we conclude, another point I wanted to make भाई कि we are on the road to 400 subscriber. We are around, जब हम लोग shoot कर रहे हैं, we are on 396. So if you are watching this and you have subscribed to it, it's a humble request. Please do subscribe. 4 subscriber दूर हैं हम लोग, so please do subscribe to our channel. Bye bye. Do subscribe guys. Bye bye.